Yeah, Assalamu alaikum. Now I'm going to continue my lecture where I left on the previous turn. So today I will start with the uh, elasticity of supply. Law of supply determinants has been completed. Now coming to the elasticity of supply. So let's see that what is elasticity. As I have told you, that law of supply means that there is a direct relationship between the price of the commodity and the quantity supplied, meaning thereby to say that when your supply price of the price of the commodity rises, then automatically supply also rises. But now the question arises that how much change in the supply. So that change can be measured, and there's a formula to measure that change, or how the supply will react with the change in the price of the commodity. This is clear with the law of supply that the price of the commodity rises with the quantity supplied also rises with the rise in the price of the commodity. But how much quantity supplied rises with the rise in the price of the commodity, meaning thereby to say कि अगर हमारे prices commodity के rise करते हैं तो quantity supply भी rise करेगी, तो there is a positive relationship. But quantity supply कितना rise करेगी, how much change will be there? So the percentage change in the quantity supplied with the change in the price of this commodity, that is known as the elasticity of supply. कि प्राइस में स्लाइड चेंज है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी स्लाइड चेंज होगी, या फास्ट चेंज होगा, या बिल्कुल चेंज नहीं होगा, या माइनर चेंज होगा. तो हाउ मच चेंज विल बी इन द क्वांटिटी सप्लाइड विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज नोन एज द elasticity of supply. Now see the definition. The elasticity of supply establishes, see, you can see ES for elasticity of supply, Q for quantity, P for price of the commodity, and the triangle you can see, that is percentage change, how much change will be there. This is the formula, but we are not going to apply the formula, but you must know that see the change in the quantity supplied for triangle and Q means simple Q quantity supplied, change in the price, and P for the price, and this is the formula. Means elasticity tells us the percentage change in the quantity supplied with the change in the with the percentage change in the price of the commodity. कि कितना चेंज आएगा, वो कितना जो हम मेजर करते हैं वो इलास्टिसिटी के थ्रू मेजर करते हैं. फिर हमने आपको 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी आई विल लेट यू नो, and that will explain that how much change will be in the quantity supply. Drastic change, minor change, no change, etc., etc. The 5 types I'll let you know. So the elasticity of supply establishes a quantitative relationship between the supply of a commodity and its price. Hence, we can express a numerical change in the supply with the or change in the price of the commodity using the concept of elasticity. Okay, this is the definition which you can read out by yourself also, because the definition or notes I have given to you. But the main thing is this, that percentage change in the quantity supplied with the percentage change in the price of the commodity, that is known as the elasticity of supply. Now, this is the curve, but curve I will explain you later on. See, perfectly inelastic supply. Inelastic matlab no change. What does it mean? Let's see. A service or commodity has a perfectly inelastic supply. Means if a given quantity of it can be supplied, whatever might be the price, the elasticity of supply such a service or commodity is zero. A perfectly inelastic supply curve is in a straight line. This one is a perfectly inelastic supply curve is a straight line parallel to the y-axis. Parallel to the y-axis. Okay, the supply of exclusive items. This is representative of the fact the supply remains same irrespective of the price. देखिए, अब आप सिर्फ ये कर्व देखिए, ये वाला perfectly inelastic, and this is the price, and this is the quantity supplied. So what it does, it shows that prices are changing, but quantity supplied is constant at the same point.
So perfectly inelastic supply explain that with the change in the price of the commodity, quantity supplied remains constant, inelastic. Generally, this is not in practical because when the price changes, quantity supplied also change. But this is one of the type, as I am telling you, the different types of elasticity of supply. So this is perfectly elastic supply, which says that with the change in the price of the commodity, quantity supplied remains constant. उसका कर्व है ये, यहाँ मैंने लिखा हुआ है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. ठीक है, तो ये हो गया. और ये कर्व आप सेपरेट कर्व बना सकते हैं, सबका अलग अलग, परफेक्टली इलास्टिक का अलग, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैंने एक कंबाइंड कर्व बना दिया. यू कैन मेक अ सेपरेट कर्व्स आल्सो. Second one is relatively less elastic supply, means the name itself indicates when a change in the supply is relatively less when compared to the change in the price. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो आपकी जो सप्लाई में चेंज होगा वो प्राइस के चेंज से थोड़ा कम होगा. तो when the change in the supply is relatively less when the compared change in the price, यानी कि जितना चेंज प्राइस में आया है कंपैरेटिवली सप्लाई में चेंज होता है लेकिन उससे कम होता है, तो उसको बोलते हैं relatively less elastic supply. When the change in supply is relatively less when compared to the change in the price, we say that commodity has relatively less elastic supply. In such a case, the price elasticity of supply assumes a value less than 1. ठीक है. Relatively greater elastic supply, this is just reverse. इसमें क्या होता है कि आपकी प्राइसेस में कम चेंज होता है कंपैरेटिवली, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा चेंज होती है. When a change in the supply is relatively more, this is just reverse of the second one. When a change supply is relatively more when compared to change in the prices, so we say that commodity has a relatively greater elasticity supply. इनके prices में जितना change हुआ quantity supply में उससे ज्यादा, तो वो relatively greater elasticity supply. In such a case, the price elasticity of supply assumes a value greater than 1. Now come to the unitary elastic. For a commodity with unitary elastic में क्या होता है कि जितना change price में हुआ same to same change quantity supplied में भी हुआ. For a commodity with a unit of elastic supply, the change in the quantity supply for a commodity is exactly equal to the change in its price. In other words, the change in both price and supply of commodity are proportionately equal. ये यूनिटरी इलास्टिक हो गया. परफेक्टली इलास्टिक जस्ट रिवर्स है परफेक्टली इनइलास्टिक का. ओके, वो क्या बोलता है कि आपकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ और क्वांटिटी सप्लाइड में ड्रास्टिक चेंज हो गया, इनफाइनाइट चेंज. A commodity with a perfectly elastic supply has an infinite elasticity. In such a case, the supply becomes zero with even a slight fall in the price, becomes infinite with a slight rise in the price. So this is indicative of the fact that the suppliers of such commodity are willing to supply any quantity of commodity at a higher price. So perfectly elastic supply curve is a straight line parallel to x-axis. ये तो ये आपके सारे ये परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है. यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ. यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज जस्ट इक्वल टू द परफेक्टली चेंज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. ये वाला पॉइंट ये है यूनिटरी इलास्टिक. ये परफेक्टली इनइलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक. ये इनइलास्टिक का रिवर्स है. इलास्टिक मतलब नो चेंज और इलास्टिक मतलब ड्रास्टिक चेंज. अब यहाँ पर देख लीजिए आप, परफेक्टली इलास्टिक में क्या है कि यहाँ पर आपकी क्वांटिटी जो है प्राइसेस आपकी कांस्टेंट है और क्वांटिटी सप्लाइड तेजी से चेंज हो रही है. ठीक है, यहाँ पर प्राइसेस चेंज हो रहे थे और क्वांटिटी सप्लाई स्टैग्नेंट थी. तो ये था परफेक्टली इलास्टिक. अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ये वाला होगा परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक क्या कह रहा है कि आपके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है बट क्वांटिटी सप्लाइड कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. ये कहलाते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. तो ये 3 हमने आपको शो कर दिया. उसके अलावा 2 पॉइंट और थे, रिलेटिवली लेस इलास्टिक, रिलेटिवली ग्रेट इलास्टिक. यहाँ पर ये था कि प्राइसेस आपके चेंज हो रहे हैं बट चेंज इन द सप्लाई इज रिलेटिवली लेस, और यहाँ पर भी प्राइसेस चेंज हो रहे हैं बट चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई इज रिलेटिवली मोर या ग्रेटर. So there are 5 types of elasticity of supply which I have explained you with the help of the graph, and you can make a separate graph also. वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे और मैंने आपको एक कंबाइंड ग्राफ दिया है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू सून द नेक्स्ट टर्न. और आपको याद ही होगा कि मंडे, यानी कि अगर मैं डेट में कंफ्यूज हुई थी, मैंने 19 बोल दिया था, बट डेट विल बी 20th of September. On Monday
I will take your written session on Google Classroom, and timing will be from 11:20 to 12:10. Okay, thank you. मम्मा मैं फोन के बाद